कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। As it is always said, इतनी भी नहीं डराना चाहिए कि डर से डर लगना बंद हो जाए, डर ही खत्म हो जाए। Ever since 2014, if there is one thing which has only evolved with time and matured, graduated better with time, it is disgust, disdainment and dislike towards the national mainstream media. Just to let you know, I call them liability media. हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार हैं विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। Beat Mamata Banerjee, beat Rahul Gandhi, beat Akhilesh Yadav. Over and over again, and out there in public domain, they've called out national media as Godi media, called out other names and also exposed as how they have been selective when it came to issues happening from a non-BJP ruled states. Joining the same bandwagon is Tejashwi Yadav. कायर है ये और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। While in the past we have seen that leaders lashing out at national media yet very quietly going back to them to give out interviews, but in 2024 Lok Sabha election a realization had dawned on these opposition leaders primarily belonging to the India bloc. Rahul Gandhi did not give an interview to any of the mainstream media. Mamata Banerjee nor a single interview to any of the national houses or their anchors. So was Akhilesh Yadav. They chose rather to speak to independent journalists, people not from mainstream media but from a responsible digital platform. Tejashwi Yadav has made it clear that this time around, ahead of Bihar election 2025, he is willing to fight a political battle against BJP, at the same time a fight against BJP stooge, the Godi media. दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं है। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे कि क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? In mass communication, there is something called enforcement and reinforcement theory. We saw it firsthand when Mamata Banerjee over and over again kept on saying the same thing, that look, these media houses are anti-Trinamool Congress. In first instance,
people did not buy. Second instance, people were put to doubt. And by third instance, people bought it. And the reason why. After 2019 Lok Sabha election debacle for Trinamool Congress, it simply reversed the electoral fortunes and in 2021 came back to power with a thumping majority. मीडिया को जो मैनेजर है, जो मालिक है, ओनर्स है, वो तो ऐसा कर रहा है सुबह से जैसे देश में आजादी का युद्ध हो रहा है, आजादी का लड़ाई चल रहा है, आजादी का जंग हो रहा है, ऐसा हाइप कर दिया। काल क्या होगा दोस्तों, काल क्या होगा? आप जब लोग मरते हैं आप दिखाते नहीं हैं, जब लोगों का दिक्कत होता है आप दिखाते नहीं हैं, जब अच्छा काम होता है आप दिखाते नहीं हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी का कोई काम है तो आप उसको विश्व नेता बना के अब गुरुदेव कहते हैं। आप लोगों को शर्म होना चाहिए, ये शर्म होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। कोई चैनल अंबानी को, कोई चैनल अदानी को, कोई चैनल किसी को ना किसी को तो है। देश भर भी जो चैनल है वो खाली बिजनेस के लिए, सौदा करने के लिए आप लोगों को बेच रहा है। Look at Rahul Gandhi, almost following the same script, be it during the Bharat Jodo Yatra or from press conferences. Rahul Gandhi had tried ensuring that his diatribes against national media and the so-called celebrity anchors are well registered in the minds of people. So yes, the results did not show in 2019, but the results did show in 2024. Again, it's the enforcement and reinforcement theory. देश में 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी, हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे। कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। For example, don't worry, I will not take you back to 2014 or the period beyond that. I would just take you back to 2025 month of April. The Pahalgam terror attack was an eye-opener for one and all. A terror attack on the soil of India where Indians were brutally killed, and that was used by national media as a communal grenade to stoke in further Hindu-Muslim tensions. The angst was so much so that poor Kashmiris who had nothing to do with this terror attack, were almost blamed for being terror sympathizers. Imagine somebody in Poonch lost his life and a so-called responsible mainstream media branded him as a Pakistani terrorist who has died in Pakistan-occupied Kashmir. It finally was a court that held these media houses accountable. Yes, a court in Jammu Kashmir allowed a FIR be registered against Zee News and News 18. There had been many such instances. For example, poor zipline operator. He was almost labeled like a terrorist. What was his fault? He whispered, Allahu Akbar. Similarly, the locals out there who actually became the first respondent were almost made to look like terror sympathizers. Lal Chowk
the famous Lal Chowk almost became infamous because these celebrity anchors were given a mandate to go there, speak to people, what in media language is said, vox pop, but while doing so, stoking such irrelevant questions that people would lose their cool. For example, Kashmiris came out on open, rebuking them, challenging their presence, and also tried asserting by not relying on national media but by putting out their own videos on social media that look, even we are against act of terror. We are against Pakistan. Godi media, Godi media, Godi media, मार डालो, मार डालो, हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशंस दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। Somebody said, क्या दिल चीर के दिखा सकते हैं कि दिल के अंदर हिंदुस्तान लिखा है? और ये शक के नज़र से कितनी दफ़ा देखोगे और कब तक? When these questions started coming out, these national media anchors quietly left Kashmir. देखो, अगर मेरे पास इस दिल को जिप होता था ना, मैं इसको दिखाता था, ये देखो मेरे मतलब हिंदुस्तान का खून है, हिंदुस्तान का हम ऐसे। अब कैसे बताएंगे? अब अगर कोई उपाय है हम बताएंगे, हम बताएंगे उनको, अगर कोई उपाय होगा उनको हम बताएंगे। यह हिंदुस्तान का टुकड़ा है। हमारा मज़हब पहले इजाज़त नहीं देगा किसी इंसान को कुछ बुरा बोलेंगे, किसी इंसान को मारेंगे। हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं, हमारे अंदर नहीं है सर जी, हमारा अपना मज़हब ये नहीं सिखाता है सर। हम सर एक बात बोलना चाहते हैं, जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ना अभी, ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल वाले फैला नहीं, ऐसा कश्मीर में पहलगाम में कुछ नहीं है सर। हमारा दिल चीर के देखो आप सर, इंडिया का ही नाम रहेगा सर। हम इंडियन ही हैं, ऑलरेडी इंडियन है। लोग सवाल पूछ के तंग करें हमको, आप इंडियन हो या पाकिस्तान हो, हम इंडियन ही है यार। आखिर हम भी इंसान ही है। हमारी आंखों में अब क्या बोलेंगे सर आपके सामने, कसम से हमारी आंखें नम होगी अब रो रो के। Imagine, there was an act of terror, there was a terror attack, and poor Kashmiris were asked to prove their loyalty towards India. And what was the question? Kaho Jai Mata Di, Kaho Jai Shri Ram. Tell me, how was that relevant? How was that relevant even to prove your sense of patriotism? A sense of patriotism through religious sloganeering? I mean, how is that even acceptable? Okay, Operation Sindoor, we are very proud of it. We are very proud of our armed forces. But while the operation was on, had you seen the alacrity of the national media? पाकिस्तान के भीतर घुस गए, उनको मार दिया, ये कर लिया, फलाना ढिंकाना। उसके बाद जब सीज फायर हो गया, किसी ने एक चूत नहीं की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब वापस आएगा? आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? हैं? ये चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? अच्छा, ये कहां तक चले गए थे? नहीं, इनका चैनल कहां तक गया था? अच्छा, इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल। बताइए आप, हद कर दिया आपने, कितना अपमान करवाया देश का। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं, अब क्या बताएं। The so-called national media never bothered to ask a couple of very basic questions fundamental to journalism. How come these terrorists managed to enter India, reach Kashmir, reach Pahalgam, which is about 200 kilometers inside our country? Where did they find these weapons from? How did they manage to carry them to Baisaran, which is almost 7 kilometers away from the last motorable road? Where are they now? How did they disappear in the thin air after committing this act of terror?
What's the status of these terrorists? Who are they? And most importantly, was there any intelligence failure? Tell me any one of these questions is illegitimate. Yet, night after night, every night, these primetime anchors have been shouting on top of their voices, not seeking accountability, but simply legitimizing the most bizarre and illegitimate idea. हिंदू खतरे में है. माफ कीजिए, हिंदू खतरे में नहीं है, जर्नलिज्म खतरे में है. Let's not go back to 2023, a year which has etched itself in our hearts with the bloodshed India has witnessed in Manipur. Yes, Manipur, a state which has bled for over 2 years, a state where the Prime Minister of this country has not visited as yet, a state where people of that state had been crying for attention, a state which is now under President's rule, a state which has barely found any mention in the speeches of the Prime Minister, a state which is an inseparable part of this country, yet, the Prime Minister did not go. Yes, the same state where you had a BJP government, the narrative double engine sarkar, failed to instill confidence, restore peace. That very state is a glaring example also as how media failed the people of Manipur. Had media been consistent in asking the government questions to hold the power accountable, probably these guns would have gone much before. But then they did not. They did not. Look at the stampede in Bangalore. Every national media went after D.K. Shiv Kumar, the Deputy Chief Minister, wanted his resignation, called him irresponsible. Show me one national media anchor who has questioned Yogi Adityanath, Uttar Pradesh Chief Minister, over Mahakumbh stampede. In fact, the government has given out a number, 37 people lost their lives. Months down the line, you needed an international media house like BBC to conduct an investigation and only to bring to fore that not 37, more than 80 people possibly have lost their lives. Yet, the government is quiet. Yet, the national media houses are quiet. And you know why? This particular video I had shot in the month of February, soon after the stampede. And this probably answers as why these media houses never questioned the Yogi Adityanath government. It is because they were getting money in forms of advertisements and sponsors. All you needed to do was log into www.ndtv.com, www.timesnow.com, www.republicworld.com, www.abpnews.com. Every homepage would show one common ad, an ad on Mahakumbh 2025. The national media that has gone after opposition leaders like Rahul Gandhi, हर दिन उनका रेजिग्नेशन मांगता है, हर दिन ये पूछते हैं कि राहुल गांधी कहाँ चले गए, कौन सी देश में जा रहे. एक बार सवाल नहीं पूछे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में कितने सारे विदेश के टूर किए और उनमें कुल मिला के कितना देश का खर्चा हुआ. पर सवाल राहुल गांधी के लिए रिजर्व्ड है. An incident in Bengal, they would ask for Mamata Banerjee's resignation. Fair enough, you should and you must. If an incident of rape calls for the resignation of the Chief Minister of that state, then in that case, the Chief Minister of Madhya Pradesh, the Chief Minister of Orissa, the Chief Minister of Uttar Pradesh, the Chief Minister of every state, including Manipur and Assam, have to resign. And I am in favor of that. Not a single incident of rape should happen anywhere. But at the same time, media selective outrage should also not happen. It cannot be kept reserved
only if there is an incident of rape happening in Bengal or in Karnataka or in Jharkhand. अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। We do not wish Tejashwi Yadav be true with his assessment or apprehension कि और पत्रकार तो बचे ही नहीं है, आप इन्हें पत्रकार नहीं कह सकते हैं। Sorry Mr. Tejashwi Yadav, we are still trying to be a journalist. Practice journalism. Hold power accountable, not to us, but to the people. If tomorrow you come to power, we would also hold you accountable to the people of Bihar. The only humble request we have, we trust you what you say now, but stand to your own words. Don't go back to our national media and give them an interview in the run-up to these elections for Bihar 2025. Jai Hind. Satyameva Jayate.